Hello everyone, welcome to KFCS, one of the favorite channel. And after yesterday response, and I am Rahul again coming the discussion of World Cup qualifier as well as Ashes 2. So I hope the same response will come again. So Rahul, how are you? Yes, I'm doing good. All is well. Yeah, yeah, okay. So Rahul, there was one question you asked in the group, and I will discuss same question from you. Then we will go to the World Cup qualifier. Asked that in a men's format there is only 5 match test series for Ashes, but in women's they include T20 and ODI. So you are in a favor of that. Uh, can you explain how? I think it'll just be I mean, if it doesn't happen, also that's fine for me. But if it happens, I'm okay with that because I think it'll be a very good addition for the Ashes to add on ODIs and T20s to it. It would also add a little bit of meaning and intensity to the ODI series and the T20 series because, especially in this day and age where people are not giving bilateral series in the red white ball cricket so much importance, making that also part of the Ashes would make that a little bit interesting for viewers to watch. Yeah. But Rahul, don't you think that test match have different importance in cricket? Actually, the real test is in a test match that you have to stay all the 5 days for the result. So in Ashes, if we talk about the history, that always Ashes is played in 5 test match series. So don't you think that Australia and England should think about women's cricket also, that they can include a in place of one, at least three matches series, at least three. Oh, okay. So I guess you flipped the argument around a little bit. Yeah, but Yeah. uh, I guess we have to be honest. I don't think. Yeah, if they have a three-match series, I would love that. No problem. But to be very honest, when in a day and age where even demand for Test cricket is in a decline, I having three women's Test matches may not be what to say economically viable. Not a it wouldn't be a smart Yeah, move to do. In fact, women's test matches are pretty rare, to be very honest. yeah, That's why yeah, you see women's test happening only one match per series. We criticize men for playing two matches per series, but in women's test cricket, it's only one match per series. So it kind of shows that women's cricket is not as popular even in the T20 format, the league formats, franchise uh, cricket. We're seeing that women's cricket is still not as popular as men's. So we are the popularity of women's cricket has to kind of grow a little bit before we talk about playing more matches in women's cricket, be it Test, ODI, or even franchise cricket for that matter. yeah, of course. Yeah. So let's now talk about the today's performance of World Cup qualifiers. So Rahul, finally USA is out of the tournament, and after this loss, that was very sad for USA because there's some players that try to grow up, but I think there is some performance issue from batsmen also. There's very slow. I think strike rate was also the issue, right? Yeah, strike rate very much the issue. Again, USA's top order has let it down in the first two matches. Also, USA had top order collapses, and once that start is not gone, and very quickly you lose four or five wickets at the top, it's very hard to recover, come back, and put up a good score and try to fight in the game. You can't keep on depending on like two players in the middle order to somehow revive the innings every time. Yeah, there were recoveries in the middle order in every match, but still not good enough to give USA a competitive score on the board. Yeah. But if we talk about the Netherlands, also they after losing the first match in this match, also they just win this in 5 wickets after losing 5 wickets. Do you think Netherlands is batting is they are dependent on Scott Edwards, Max O'Dowd, and Vikramjit Singh? I think so. Yeah, they're very much dependent on these players. In fact, their opening is pretty much everything for them because very often Netherlands has had very good starts at opening with the openers, but they've not been able to capitalize on it and put up a good score. They've had batting collapses after that. And that's been their problem.
Yeah, their batting performance was not up to the mark today, but was still good enough to win them the match. For a target of 212, this batting performance is good enough. That that's what I'll say. But good enough will not be good if you play against another opponent like West Indies or Zimbabwe. Yeah, they've lost pretty badly to Zimbabwe. That was on the back of some very poor bowling. But I think the next match for Netherlands is going to be very important. It's basic. I think it's pretty much a do or die match, because if they lose against Nepal, then they're more likely to be eliminated, because the last match is against West Indies for them. So they have to defeat Nepal if they want to qualify. In fact, if they defeat Nepal, they qualify for the Super Six. So uh, although they have two chances, they have to really seal it against Nepal, because defeating West Indies is going to be tough. Yeah. Uh, if we talk about the West Indies today performance of the Rahul here, uh, three wickets in quick succession. No one think that this is the West Indies team that they are playing, but Shai Hope and Nicholas Puran again they come to the party and made a score of more than 300 runs. So, how you see this West Indies team, a batting combination? Let's say if you look at the opening combination or top three, not the most dangerous top three in the world, definitely, but they have some very good hitters in the middle order who can really accelerate the scoring. Even if a few wickets fall quickly, they can basically hit their way out of trouble. So that's what we have seen from this West Indies team. And today, Shai Hope and Nicholas Puran were quite brilliant. Yeah. Rahul, next match is Zimbabwe versus West Indies. But you see the West Indies concern that they already know that Shai Hope is a type of ODI batsman. If he plays from the opening, he can score more and more runs. Even though West Indies is succeed making 350 runs almost. But do you think that Shai Hope don't lose his place, should come to the opening slot and bring another place in a middle order? Yeah, I think that's definitely a good idea. In fact, Shai Hope used to be an opener for West Indies. He Yes, is yes. opened. He used to be an opener, so definitely, and if he's in very good form, then why not go and open with him? You should might as well start off with an informed batsman, get a good opening start, and then you have the middle order batsman to capitalize on that start and give the West Indies a big total. So I think Shai Hope being promoted up the order is a very good idea. But if we talk about the West Indies team also, why they are experimenting? You see, the Charles is your T20 player. He is not your in your ODI format. If I talk about the history of West Indies, they have Shimron Hetmeyer not included in the squad. Still, I think he is left there playing again. I think so. That's why he's not in this squad. But why West Indies team is experimenting? Do you think this is not a good experiment? Shai Hope at number five. Mm, yeah, it may not be a very good experiment, and especially in a World Cup qualifiers. I mean, World Cup qualifiers, you have to treat it like a World Cup tournament, kind of. So it's not the place to start experimenting, especially when there are teams. Though they are below you, they may be lesser teams, but they are also aspiring to win, and they are trying to challenge you to Yeah, the World Cup spot. It's a very tough field this time. This World Cup qualifies. It's not an easy field for anyone to clear. So it's better to go with your best 11, best combination. yeah. But Rahul, when next match is with Zimbabwe, Zimbabwe is very dangerous. If I see both the matches, Zimbabwe players are outstanding. Irwin, Sikandar Raza, Williams, all three are firing. Or if I talk about the West Indies team, they have good players in a middle order. If I talk about the Brooks is not in a playing 11. Then why you are wasting this type of player? Do you think Rahul Iyer that Brooks should come and Shai Hope will go up to the order at least number three? Shai Hope can play. Then Brooks will come in a middle order and make some runs. Mm, I think that should happen. That is a really good idea. I feel Brooks coming in the middle order, he can also be a dangerous middle order batsman. He comes in the middle order. Shai Hope
goes up the order, that adds a lot of strength and stability to the batting lineup. Yeah. But how much you rate today the Puran innings? The way Nicholas Puran played second 100 in ODIs after so many days. Yeah, it was a really good performance. He scored at a pretty fast rate also for an ODI. He managed to score fast, and his partnership with Shai Hope is basically the reason that West Indies got to the big total that they reached in the end. Yeah. Okay. So Rahul Iyer, do you think that Kyle Mayers is justifying his place in West Indies ODI circuit? Do you think Kyle Mayers deserves an ODI squad the way he is Mm, playing? I guess everyone has their ups and downs, their bad form once in a while. I mean, I have generally seen Kyle Mayers as an all format player, someone who can play all the formats. Because if you see, he has managed to play even Test cricket, Yeah, Test cricket. and he has played Test cricket as well. He's played in T20s, he's played in ODI format, and he's even opened both the batting and bowling. So he definitely has the abilities to be in the ODI squad. In fact, his Test debut began very brilliantly, if you recall. I mean, where he scored a double hundred in the fourth innings in Bangladesh and helped West Indies chase down close to nearly 400 run target on day five. So he definitely has a lot of abilities in the ODI format, and having played both Test and T20, ODI cricket is basically a combination of both those skills. So you can play Test and T20, you're definitely good for ODIs, in my opinion. Yeah. Okay, so talking about the Nepal against Nepal, finally Sandeep Lamichhane got a wicket. So how you are feeling as a cricket fan that finally Sandeep Lamichhane have wickets in his account? Yeah, it's definitely a relief for Nepal fans that Lamichhane has got a wicket. I mean, he badly needed that, and he needs to step up more for Nepal. He's the main player in this Nepal team. He definitely needs to step up for Nepal in a big way if they want to get into the Super Six and continue their journey into the World Cup. He's had a lot of controversies off of the field, so he definitely needs to show some performances on the field to put that aside. Yeah, definitely. So now the major topic discussion, Rahul, is tomorrow the match is between Sri Lanka and Oman, and you know Rahul that Oman is in a great form, back to back matches. He made one upset also. Do you think Oman will upset Sri Lanka also? I think no. I mean they might be competitive, but I think Sri Lanka is a bit too tough for Oman to beat right now. Oman defeated Ireland, yes, but beating Sri Lanka, I think, is going to be beyond them. I don't see it happening. Yeah, if we talk about the Sri Lanka squad also, without Shamira, the way Sri Lanka is playing, do you think that Sri Lanka is improving day by day, improving his cricket? Yes, they are definitely improving their cricket, and they had a good preparation coming into this World Cup qualifiers. They defeated a very tough Afghanistan team, although it was a home series, and we don't normally rate beating Afghanistan highly. But Afghanistan is a tough team for Sri Lanka to beat. They've been competitive against Sri Lanka in the past, so definitely getting a series win against them gave them some confidence coming into this tournament, and they kind of showed it in the first match. They got off to a very good start in the tournament. They really crushed UAE. I think they can do the same against Oman. Yeah. But if we talk about the Afghanistan also, the first match Sri Lanka lost, but no one thought about that. Can Sri Lanka come back and win that series 2-1? That was big achievement for Sri Lanka also. But do you think, Rahul Iyer, that there is 1 or 2% chance Oman can upset Sri Lanka? Any percent chance? 1 or 2%? Yeah, maybe 1 or 2%. That's about it. I don't think any more than that. Yeah, if Pavan see this video, will definitely angry because the Sri Lanka fan. I better not say 10%. That'll be.
Yeah, definitely. But yes, if we talk about the Super Six, also, picture is slightly clear in both the groups. I don't think that there will be much competition. But in Sri Lanka group, uh, do you think the way Ireland is playing in the Sri Lanka group, Ireland will come up? It's going to be very difficult for them because one of their matches is against Sri Lanka, so it's very likely even if they can defeat UAE for sure, but they're likely to lose to Sri Lanka. And with a 1-3 record, you have to kind of depend that two other teams slip up Yeah. and they win only one match. So now, if Sri Lanka tomorrow they defeat Oman, which is most likely, you have two teams on 4 points, and then there is already Scotland with the one win. So then you have to hope that Scotland loses all their remaining matches. Scotland has won only played one, and they won that match. So you have to hope that they will lose three matches, and then UAE also wins only maximum one match. So this is your hope, basically. This is So Rahul, you are expecting that tomorrow UAE must beat Scotland. Is it possible? mm, that is going to be tough. And then on top of that, yeah, UAE has to defeat Scotland and then lose their other match, lose to Ireland. Ireland has to defeat UAE, and UAE should defeat Scotland. So there's another complication. So Ireland basically is depending on net run rate now to go through. That is, if they win one match, they'll so practically speaking, they have to defeat UAE and also upset Sri Lanka in order to have a chance, a shot at making the Super Six. Having said that, for Sri Lanka tomorrow, the match against Oman is very crucial because now Oman has won their first two matches, so they are very likely to be in the Super Six. So Yes. by defeating Oman tomorrow, they're likely to carry on those points into the Super Six stage, because in the Super Six they won't play Oman again. They'll basically play the teams from the other group, whoever comes out of the other group. So whatever points you get against the teams from your group who also make the Super Six, you carry on those to the next round. So I think two crucial points for Sri Lanka tomorrow as far as the Super Six stage is concerned. Yeah. Rahul, if we talk about the UAE team also, they are dipping day by day. We see the UAE team that performing good. If I talk about the Rohan Mustafa, Basil Hamid, Ayan Khan, these are that type of players, especially Mohammad Wasim. I'm very shocked to see Mohammad Wasim, how he is playing. He's a, I think, a good scorer for UAE. So, do you worried about this UAE that how they are dipping day by day, dipping down? Yeah, it is pretty concerned, and it's kind of shocking as well because this it's surprising that UAE hasn't really been more competitive than they are, because they're a nation that has hosted a lot of cricket. Uh, so they've hosted many big tournaments. They hosted the T20 World Cup in 2021. They hosted one and a half IPL seasons also. So, and now they even have their international league T20. Although it's mostly foreigners competing in that, they still uh, what to say, they're hosting a lot of cricket, so they should have gotten some idea of how to develop their cricketers also. So they're good at hosting cricket, but unfortunately they're not very good at playing cricket. That's a sad reality for them. They have some talented players, but still it's not really up to the mark. Yeah, but we talk about this UAE team, the way they perform in a T20 World Cup, the way they perform in T20 Asia Cup also, he was better. We don't know where this UAE team vanished suddenly. Rahul Iyer, do you think they are missing Chirag Suri in this lineup? Yeah, I think they're very much missing Chirag Suri in this lineup. Yes. Because if we see the performance, only Vritya Arbind is stepping up for UAE. Sometime Mohammad Wasim, but strike rate was not too good. So I think this team has so many concern. In fact, Basil Hamid is a good
all rounder, but team is not performing, and their bowler is also big concern. So, what do you think that UAE should do now? How they can perform? Mm, there are no real solutions. I've not watched too much of UAE cricket, unfortunately, to give too many solutions. But they basically have to hope that some of their top players like Muhammad Wasim, Ritya Arvind, Basil Hamid come up on top. Even Karthik Mayappan and Zahur Khan, they have some abilities. Those are not bad players either, and they've performed alongside a lot. Played alongside a lot of international cricketers now. Now that they have the International League T20, so they somehow have to bring that experience into play in this tournament. Yeah, yeah, definitely. So, Rahul, now discussion will be moved to India. Indian team now. Indian team is going to be selected for West Indies tour. So Rahul, who is your in your mind according to playing 11? Do you think that player need to be changed? Should be replaced from young players like Yashasvi Jaiswal or Sarfaraz Khan in a middle order, so that India can improve in upcoming cycle Mm, for West Indies I tour? think West Indies tour is a good place to experiment, and yeah, I think you can start with Yashasvi Jaiswal and Sarfaraz Khan playing in the team. I think it's a good place to experiment with some youngsters, because West Indies is not a very tough tour compared to touring England, Australia, or South Africa. So this is a good place to start off some youngsters, some new players for the new cycle. Uh, I think Rohit Sharma is going to be the captain of that series, but I think it's time Yes. to maybe that's not such a right decision. If BCCI wants to replace Rohit Sharma in the future, maybe I think this series is also a time to start with a new captain. I would have preferred that, because for a single World Test Championship cycle, I think it's better if you have a single captain rather than Rohit Sharma captains maybe until South Africa tour, and then suddenly after South Africa tour again you have a new captain coming in. I think again we'll be starting with a new captain in the middle of the cycle. So I think that situation has to be avoided. So I think now is the time to start with a new captain, groom somebody, find maybe even choose Ravi Chandran Ashwin, some other senior player, just as a stand-in, maybe like for the next 2 years or so, for at least this cycle, and then in the next cycle choose someone else established, a more long-term captain. Yeah, if we talk about the long-term captain also, do you think Rahul Iyer, the way Ajinkya Rahane led a team in a Gawa win and hold a series 2-1 after 36 all out, do you think Rahane is also in a scene of captaincy for India in upcoming if BCCI try? I think he should be, because if BCCI could trust him as a stand captain, every time Virat Kohli was not available as a test captain, Rahane stood in and got the job done. In fact, even in the 2017 Border Gavaskar Trophy that was played in India, if you remember, Virat Kohli couldn't play the last match because of injury, and Rahane stood in as captain, and we got the job done in the decider. Again, India won that series in a decider with the Rahane being the captain. Rahane also stood against, although against much weaker teams. I think in 2018 he stood in as captain in the Afghanistan match in Bangalore. We won that, and then of course the Border Gavaskar series in Australia. He stood in, and as you said, we won it from 36 all out. We won at the Gaba. So I think Rahane should have been trusted as the new captain, even after Rohit Sharma quit his role as. Sorry, even after Virat Kohli quit his role as captain, I think Rahane should have taken over as the captain. Of course, even though he was not really in form, if you give him the captaincy, he might somehow bring back his form, because Rane is not a type of player whose performance will drop based on captaincy. Rahane took up the captaincy in that Australia series, and he scored a century at the MCG as a captain. So he's not a player who
whose performance will come down because of captaincy. So I would have gone with Rahane as captain, even if he's. Yeah, I think there's some network issue, but yes, Rahul is talking about the Indian team, that which type of Indian team should be there. So I think, according to him, he's right that Ajinkya Rahane should be in the place, because Ajinkya Rahane have good records, and especially in overseas, he is a good player. So as a player and good player, as a captain, he can perform. And if you see Ajinkya Rahane performance in WTC final was also exceptionally good. So I think he is that type of player. He can perform. So, guys, any question you want to ask, you can ask in the comment section. I will reply. Yeah. So, I was there for Indian vision. I think so. The if Indian team think of experimenting. So, if you're thinking about the experimenting also, so one name is Yashasvi Jaiswal, another is Sarfaraz Khan. Also, that Sarfaraz is waiting for his name. There will be few changes in bowling lineup also if we see the Siraz and Shami. Okay, yeah. Yes, Rahul. Yeah. Oh, my interview is. Yeah. So can you hear? Yes, yes, yes. I'm hearing you. Yeah, Yeah. So I was saying that Rahane could have been an option as captain. You could have also had Ravichandran Ashwin as a captain. Although Ashwin did not do very well in the IPL as a captain, he didn't fare very well as an IPL captain. You have to see that just because somebody is not a good captain in the IPL doesn't mean they cannot be a good test match captain. The prime example is Virat Kohli. Virat Kohli, all these years, he never uh, did well as an IPL captain. He never won an IPL as a captain, but he did very well as a test captain for India. So I think Ashwin is a very good option because he has a very good cricketing brain, in my opinion. So he's very much good for test captaincy, if you ask me. yeah. Okay, so Rahul, if we see the playing 11 of Team India, if we include Yashasvi Jaiswal, so you will allow the Yashasvi Jaiswal to play in middle order, because there is Rohit Sharma also. You can't neglect Shubman Gill. So Shubman Gill has also good record in Test matches. So you are expecting Yashasvi Jaiswal to come in middle order as a lefty batsman, and you need lefty batsman also in the middle order. Mm, I think you could bring him in the middle order, but I think you could also maybe replace Cheteshwar Pujara, put him in Cheteshwar Pujara's place as the number three batsman. Given he is naturally an opening batsman, you can push him one slot down, have him come in at number three, and in place of Cheteshwar Pujara. In my mind, although Cheteshwar Pujara, we say he's a classical test batsman and all that, and people think he is Rahul Dravid like. Uh, I think Pujara is not really informed. I think it's time to move on from Pujara because even after playing so much in county cricket, when he comes back to the Indian team, he's not really putting in the kind of performance that is expected from him. So it kind of gives you the feeling that he's not quite up to the mark in test cricket. It feels like his career could be over, especially
in an era where we are talking about showing positive intent, trying to score runs quickly. Pujara is batting too slowly. That's another issue with him. So, but even if Pujara is not done, you need to kind of look for replacements in this West Indies series. And I think Yashasvi Jaiswal should be given a go at number three, and long term should try to take Pujara's role at number three. I think that's a very good option. Okay, so if we talk about this team India, they are also struggling for bowling option also, because in World Test Championship final also the same thing happened. So do you think that they will do experiment bringing Mukesh Kumar, or maybe a few more bowlers like Rashid Krishna, maybe in a playing 11 or in a squad? I think they can definitely give Prasid Krishna a try in the playing 11. I think that's a very good option. I'm not sure about Mukesh Kumar exactly, but yeah, anything is fine. Any experiments are fine for this West Indies series. West Indies playing in West Indies, even though it's an away series, it's not a tough assignment. So this is the good stage to give experiments to players in the team and try to groom players for the future, for the long term. Yeah. So let's see the what type of performance should be there from India. But I'm expecting that there will be a few more changes in Team India, so that Team India will perform for upcoming cycle. So one more question for wicket keeping option also. Do you think that Ishan Kishan should be groomed in place of KS Bharat? Mm, I'm not very sure because when it comes to wicket keeping, India will have Rishabh Pant coming back, and I think Rishabh Pant is should still be the primary choice for wicket keeping in the team. He may not be a conventional Test batsman, but he has done really well in Test cricket so far and played so many crucial knocks for India. So I think Rishabh Pant should be the long-term wicket keeper. Ishan Kishan, to be frank, he's not been impressive enough even in the shorter formats of the game, which are supposed to be his strengths. So I'm not a big fan of trying Ishan. I don't see much of a future for Ishan Kishan when it comes to Test cricket. Yeah. So let's see what will happen, Rahul. So thank you very much today for your time and a great discussion. Hope for a good match in a qualifier also, and let's see what will happen tomorrow. We will discuss again and talk about the World Cup qualifiers. So Rahul Ayer, according to you, how qualifier is going on? Do you think that is quite interesting? We will get new results. Mm, so far, I mean, I could say it's quite interesting, but I mean, Group A looks a little bit straightforward. I kind of feel it's kind of predictable that it'll be West Indies, Zimbabwe, and Netherlands qualifying. That looks pretty straightforward to me, unless Nepal pulls off any upset. We've not. But Group B has been a little bit shocking. I didn't expect Ireland to be two losses in two matches, that too losing to Oman and Scotland. In fact, even against Scotland, I felt like Ireland had the match in the bag with 4 overs to go. It looked like a definite win for them, and they managed to lose that game. I mean, when you're defending 10 runs, 50 runs off last 5 overs with and you have only two wickets to take, you would think that it's game, set, and match. But that didn't happen for Ireland. They let that match get away from them. So, and I think that might be the tournament for them. They may not qualify for the World Cup. What is a real pity though about this tournament is only two teams can get through. Unfortunately, the ICC back in 2015, from 2015 to 2019, they reduced 14 teams to 10. So that means only two teams can get through in qualifiers, and I think that is a bit of a shame because a lot of good teams are missing out on the World Cup now. So that's the unfortunate part of the tournament. Yeah. Yeah. Yeah, okay. So welcome, Ashwini. Ashwini, let's talk about the performance of West Indies team first. Today, you are happy to see the Nicholas Puran, the way Nicholas Puran and Shai Hope made a comeback, and finally West Indies managed to make a big score. Yeah, So, yeah.
Thank you, Kunal, for taking me to the stream, and thank you, Rahul. You're also coming. Yeah, I think if you saw the match between West Indies and Nepal, I think अगर आप देखें तो आई थिंक वेस्ट इंडीज का जो स्टार्ट था वो इतना अच्छा नहीं था. उसके बाद जिस तरह से उनका जो पार्टनरशिप रहा है, आई थिंक पूरन और शाई होप, मैंने जो आपको कल बताया था कि वेस्ट इंडीज के पास अब उस तरह के बैट्समैन आ गए हैं जो रुक कर या आपको की टिक्कर खेलना जानते हैं. जिस तरह से आज शाई होप है, ब्रेंडन किंग है, रोशन जेज है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं और वनडे क्रिकेट उनकी गेम को सूट करता है. और आज उसी तरह से शाई होप ने बैटिंग की. अगर आप शाई होप को पिछले कई साल से देखें तो वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओडीआई बैट्समैन रहे हैं. और अगर आपने देखा होगा कि उनकी आई थिंक 15 या 16 सेंचुरीज हो चुकी हैं ओडीआई क्रिकेट में, और हम उनका भी नाम नहीं लेते हैं. कि हम बाबर आजम का लेते हैं, विराट कोहली का लेते हैं कि वो ओडीआई क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, बट आई थिंक शाई होप भी ऐसे प्लेयर हैं जो आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग में. और आज मैं कहूँगा एक उनकी एक और बहुत अच्छा शतक लगाया उन्होंने. प्लस आई थिंक निकोलस पूरन, हम जानते हैं उनका क्या पोटेंशियल है, और अगर वो अपने कहते हैं कि अगर पीक पर हो तो उनसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कोई नहीं है. तो आई थिंक जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की, आज उन्होंने दिखाया है कि एक कहते हैं एक स्टैब्लिश टीम और मिनोज में क्या फ़र्क है. तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने आज वही शो किया है. जी। अश्विनी जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है? शाई होप के पास कैपेबिलिटी है या ओपनिंग करने की, ब्रुक्स बाहर बैठे हुए हैं, ब्रुक्स आपके मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों आप चार्ल्स के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? और काइल मेयर्स भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टीम के लिए, तो वो प्रॉब्लम बन रही है वेस्ट इंडीज की। आई थिंक कायल मेयर्स को अगर देखें, कायल मेयर्स आपकी टीम में एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करते हैं. अगर आप ओवर द ईयर्स देखें, कायल मेयर्स जिस तरह के क्रिकेटर हैं, ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं. और हमने उनको देखा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में, खासकर T20 और 50 ओवर फॉर्मेट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. तो आई थिंक कायल मेयर्स का तो टीम में जगह बनता है. और रही बात जॉनसन चार्ल्स की, नो डाउट उनका जिस तरह से उनकी बैटिंग है वो T20 क्रिकेट को ज़्यादा सूट करती है. बट आई थिंक अगर आप देखें जब से उनका कमबैक हुआ है तो उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं रहा है. तो आई थिंक अगर आप एक कॉम्बिनेशन सेट देखें तो जो उनका मैनेजमेंट है, डैरेन सैमी और काल ऊपर, अगर आपने काल ऊपर को खेलते हुए देखा होगा और जो जैसी उनकी कैप्टनसी थी, आई थिंक वही मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में नजर आ रहा है. वो थोड़ा एक टीम में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, वो ज़्यादा चेंजेस नहीं देखते. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्लेयर का एक दो मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसको सडनली चेंज कर देंगे. तो एक कंटिन्यूटी के साथ वो टीम को रखते हैं. तो आई थिंक वो थोड़ा सा और चांसेस देंगे. अगर हाँ, अगर 4-5 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं होता है तो आई थिंक जो बेंच में बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको वो मौका जरूर देंगे. जी। अश्विनी जी, कल एक बहुत बड़ा मैच है, मतलब बड़ा तो नहीं, बट ओमान ने जिस तरह से अपसेट किया है टीम्स को, बैक टू बैक 2 विन्स, और सामने अब श्रीलंका की टीम है। क्या कोई कल अपसेट दिखाई दे रहा है श्रीलंका और ओमान में, या फिर श्रीलंका आसानी से जीतेगी? आई थिंक श्रीलंका और ओमान में एक श्रीलंकन कनेक्शन है, वो है उनके जो कोच है दिलीप पेंडिस. दिलीप पेंडिस बहुत रिनोन्ड फेस रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट के. और जिस तरह से उन्होंने ओमान क्रिकेट में काम किया, आई थिंक वो काबिल तारीफ है. और जिस तरह से एक एसोसिएट नेशन को उन्होंने इस काबिल बनाया कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेल सके. आपको पता ही है, सभी जो एसोसिएट नेशन है उनका एक मेन प्रॉब्लम रहा है कि उनके मैक्सिमम एक्सपेक्टेड्स खेलते हैं उनकी टीम में. तो आई थिंक फिर भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया. हमने 2016 से देखा, जब उन्होंने वर्ल्ड T20 में क्वालिफायर्स वहाँ पर खेले थे, इंडिया में जब उनके क्वालिफायर्स मैचेस हुए थे. और 16 से और 23 तक आई थिंक उनकी जर्नी मैं कहूँगा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं. और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स दिखे हैं कि जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनकी टीम में. बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि ओमान और श्रीलंका की टीम का कोई मैच नहीं है. और कल के मैच में मैं थोड़ा ये देखना चाहूँगा कि जो श्रीलंका है अपने जो उनके जो फास्ट बॉलर्स है जैसे चमीरा है, even the likes of Lahiru Kumara, if he's in the squad, I don't know हाँ, what's the real. प्लेइंग 11 में है। यस, तो मैं चाहता हूँ कि श्रीलंका अपने जो तीनों बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ जाए. क्योंकि अगर मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि जो लहिरू कुमारा है, दुशांता चमीरा है, इवन इवन दैट गाय जूनियर मलिंगा,
आई थिंक अगर इनका एक कॉम्बिनेशन फिट बैठता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मैं कहूँगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। जो एक तो चमीरा की पेस है, प्लस महेश पथिराना की अनऑर्थोडॉक्सी, उनका स्लिंगी एक्शन, प्लस कुमारा थोड़ा सा हिट द डेक बॉलिंग करते हैं। और अगर आप उनके बॉलर्स देखें, दैट गाय थीक्षणा, थोड़ा अजंता मेंडिस टाइप का एलिमेंट है उनमें, एंड देयर मेन स्पिनर तो हसरंगा। या हसारंगा। आई थिंक हसारंगा तो मैं कहूंगा कि ऐसी छोटी टीमों के लिए तो बहुत खतरनाक बॉलर है, वो खा जाएंगे इनको, मैं ये कहूँ। डेफिनेटली। पर अगर मैं सेकंड मैच की बात करूं, यूएई वर्सेस स्कॉटलैंड, यूएई की टीम काफ़ी डाउन नहीं हो गई अश्विनी जी? मतलब उनके परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो चुका है। मोहम्मद वसीम भी परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह से, टीम का स्कोर भी उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से हमने इनको एशिया कप में देखा। T20 में क्या परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान के सामने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। तो अश्विनी जी क्या लग रहा है, मतलब मोहम्मद वसीम की फॉर्म की वजह से टीम डाउन हो गई है या चिराग सूरी को मिस कर रहे हैं? आई थिंक मैं ये कहूँगा कि उनकी जो यूएई की टीम है, जितने भी हम एसोसिएट टीम्स को देखते हैं, उनका जो मेन प्रॉब्लम रहा है उनकी जो मैचेस की, उनकी जो कंटिन्यूटी है वो उस तरह से उनको नहीं मिल पाते हैं, क्वालिटी ऑफ मैचेस। हमने देखा होगा कि अगर आप जितने भी अरब नेशंस देखे, चाहे यूएई है, ओमान है, उनमें जो मैक्सिमम प्लेयर्स है वो 9 to 5 जॉब वाले प्लेयर्स है, रेगुलर प्लेयर्स नहीं उनमें खेलते हैं। मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, उसके बाद वो क्रिकेट खेलते हैं। और आपको इस मामले में भी उनको दाद देनी चाहिए क्योंकि वो इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो क्रिकेट खेल पा रहे हैं। तो आई थिंक एक होता है ना कि अगर आप एक स्टैब्लिश नेशन का इनके साथ मैच करें तो वहां पर क्रिकेट की कंटिन्यूटी है, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल टीम से नहीं खेल रहे हैं तो नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या बाकी लीग्स में खेलते हैं, पर इन प्लेयर्स के पास मौका बहुत लिमिटेड होता है। तो जो फॉर्म है इनका, कभी जाए अच्छा जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इन प्लेयर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि इनको मैचेस की कंटिन्यूटी ज्यादा चाहिए, और जितने इनको मैचेस मिलेंगे और उतना इनकी टीम के लिए अच्छा रहेगा। अश्विनी जी, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं कुल मिला के वर्ल्ड कप जी। क्वालिफायर्स, मतलब पहले भी होते थे, बट क्या इस साल कुछ अलग देखने को मिला है? क्या मज़ा आ रहा है इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर में? बड़े स्कोर्स भी हो रहे हैं, अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है। या मैं सच कहूँ, मैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को आई थिंक मैं ना के बराबर ही फॉलो कर रहा हूँ, इतना मैं मैचेस देख नहीं रहा। तो मेरे को जो बाकी टीम्स का इतना आइडिया भी नहीं है, बट हाँ, दो टीम्स को मैं देखना चाहता था। उनमें से एक नेदरलैंड्स की टीम थी, क्योंकि जिस तरह से मैंने उनको वर्ल्ड T20 में देखा था, मेरे को उस टीम में एक क्षमता लगी थी। प्लस आयरलैंड की टीम को हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया है। बट हाँ, नेपाल है और जितने भी मिडल ईस्ट के जो नेशंस हैं, उनके उनके प्लेयर्स के बारे में मेरे को इतना नहीं आइडिया है। वो हम जब टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तब उनको थोड़ा सा देखते हैं। बट आई थिंक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इवन जिम्बाब्वे का तो आइडिया है कि जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस रही है। बट हाँ, मैंने अभी जितना थोड़ा बहुत इन टीमों का देखा है, आज जैसे नेदरलैंड की टीम का हमने देखा, तो उनके पास जो कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह से आई थिंक रियान क्लेन खेले हैं, हम्म। इवन लोगान वान भी, जिस तरह से उन्होंने आज कंडीशंस का फायदा उठाया। क्योंकि जो अभी जिम्बाब्वे में जो मैचेस हो रहे हैं वो डे के टाइम हो रहे हैं, और आपको पता है कि फर्स्ट इनिंग्स में जो क्योंकि सुबह में हो रहा है तो वहां पर हल्का सा बॉलर्स को फायदा मिलेगा, और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। जो कि नेदरलैंड्स अपने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ नहीं है, बट आई थिंक उनके पास जितने भी बॉलर है, आज मैंने रैन क्लेन को फर्स्ट टाइम देखा। उनकी बॉलिंग देख के मेरे को रेयान मैक्लेनन की याद आ गई, वो भी साउथ अफ्रीकन है। और रेयान क्लेन भी साउथ अफ्रीका से आई थिंक नेदरलैंड की टीम में है। तो काफी साउथ अफ्रीकन आपको नेदरलैंड की टीम में देखेंगे, क्योंकि उनका भी डच ओरिजिन है मैक्सिमम साउथ अफ्रीकन का। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। तो आई थिंक अच्छे लगे मेरे को जिस तरह से आज बॉलिंग की। बट एक बात कहूंगा कि जितने भी मैंने एसोसिएट टीम्स देखी है उनमें एक दो मेरे को प्लेयर्स बहुत अच्छे लगे। जैसे आज अगर मैं नेदरलैंड की टीम का देखूं, तो उनके जो ऑलराउंडर है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बासडे लिडे। आई बेस्ट थिंक डिलीडर। वो काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं। मेरे को ऐसा लगता है अगर वो किसी बड़ी टीम में होते तो उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा और बढ़िया होता। उनमें ये क्षमता है कि वो शायद रियान टेन डिस्कॉटे जो नेदरलैंड के स्टार प्लेयर रहे हैं,
उनकी वो बराबरी करे, मे बी उनसे आगे जाए अगर टैलेंट वाइज, तो मेरे को लगता है उनमें वो क्षमता है। थोड़ा सा अगर वो बड़ी क्रिकेट और खेलेंगे तो वो आने वाले टाइम में नेदरलैंड के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। या अश्विनी जी, वही क्वेश्चन करूंगा आपसे जो राहुल से मैंने किया था। या एक्चुअली हम एशेज की बात कर रहे थे। आई थिंक आपने ग्रुप में भी देखा होगा, एक क्वेश्चन की पुटअप किया था राहुल अय्यर ने कि या क्या एशेज को जिस तरह से वुमेन्स टीम में ओडीआई T20 टेस्ट को मिक्स कर देते हैं, क्या मेंस में भी ऐसा करना चाहिए, तब पता चले कि भाई एशेज में असली किंग कौन है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया है? ये मैं टेस्ट आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया। मतलब जैसे मेंस में एशेज जो है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है, या ठीक है। वुमेन्स में अभी जैसे टेस्ट मैच चल रहा है वुमेन्स का, इसके जी। बाद 3 ODI है, 3 T20 ओके। है, तो ओके। उनकी एशेज में ना वो तीनों फॉर्मेट इंक्लूड होता है। ओके। तो आपको लगता है कि मेंस में भी ऐसा होना चाहिए, या फिर वुमेन्स को टेस्ट मैच में आना चाहिए ज़्यादा, एटलीस्ट 3 टेस्ट मैचों की सीरीज? आई थिंक अगर आप वुमेन क्रिकेट का शेड्यूलिंग देखें और मैन क्रिकेट का शेड्यूलिंग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो मैन क्रिकेट की जो शेड्यूलिंग है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइट पैक्ड है। इतने टेस्ट मैचेस, अगर 5 टेस्ट मैचेस भी वो निकाल रहे हैं, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप वुमेन वुमेन क्रिकेट में देखें तो वहाँ पर जो मैचेस का रेशियो है इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि उनकी भी लीग्स होती हैं, WBBL की लीग्स होती हैं, इवन जो इंग्लैंड में उनकी जो लीग्स है वो भी चल रही हैं। बट अगर आप मैचेस का रेशियो देखें इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो वुमेन्स लीग है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल सकता है कि आप एक टेस्ट मैच के बाद 3 ODIs खिलाए। पहले 90s के टाइम में ऐसा होता था, जब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर करती थी, इंग्लैंड टूर करती थी, वहाँ पर 1 या 2 टेस्ट के बाद आप ODI मैचेस देखने को मिलते थे। और अभी हमने रिसेंटली अगर हमने देखा है जो साउथ अफ्रीका की जो लीग हुई है, तो लीग के बीच में ही उन्होंने साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के साथ एक ODI सीरीज भी खेल ली थी। तो आई थिंक शेड्यूल्स का फर्क होता है। तो आई थिंक जो मेंस क्रिकेट का शेड्यूलिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। आई थिंक राहुल का जो आइडिया है वो अच्छा है, बट आई थिंक मैं ये कहूँगा कि शेड्यूलिंग थोड़ी मेंस क्रिकेट में ज़्यादा टाइट है वुमेन्स क्रिकेट को देखते हुए। जी वहाँ बिल्कुल। पर थोड़ा सा। एक क्वेश्चन किया था मैंने राहुल अय्यर से, उन्होंने जवाब दे दिया है कि जी। इंडियन कैप्टन उनके हिसाब से कौन है, क्योंकि रोहित शर्मा टिकने वाले नहीं है, दिख तो रहा है, इतना हम्म। खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। अश्विनी जी, आपका कैप्टन कौन है? राहुल, अगर रोहित शर्मा का ये आखिरी सीरीज है एज ए कैप्टन तो? आई थिंक मेरा शुरू से मानना है कि जो इंडिया की रेड बॉल टीम है, अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे, ओबियसली विराट नहीं बनना चाहेंगे, जो भी उनके साथ 1-2 साल में उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, तो अजिंक्य रहाणे ही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसका मेन रीजन ये है कि अजिंक्य रहाणे बेस्ट टेक्नीशियन है। जिस तरह से आपने उनकी कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया में देखी, इवन इवन दैट दैट टेस्ट मैच इन धर्मशाला 2017 में, जिस तरह से उन्होंने फील्ड चेंजेस की थी, क्योंकि अगर आपको वो टेस्ट सीरीज याद है तो वो टेस्ट सीरीज भी बहुत टाइट टेस्ट सीरीज थी। ये जो अभी जो टेस्ट सीरीज घटी है उसके मुकाबले, तो वहां पर मैं कहूंगा कि वहां पर जो रहाणे की कैप्टनसी है उसकी वजह से आप धर्मशाला का टेस्ट जीते, जो कि उमेश यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बॉलिंग के साथ। बट आई थिंक उनकी मैं कैप्टनसी को दाद देना चाहूंगा। और इयन चैपल हिमसेल्फ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन माने जाते हैं अपने टाइम के, उन्होंने भी यही कहा था कि अजिंक्य रहाणे इस टाइम जो इंडिया की रेड बॉल टीम है उनसे बढ़िया टेक्नीशियन नहीं है। तो आई थिंक रहाणे ही मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। बट एक रहाणे की एक समस्या रहेगी कि क्या रहाणे जो उनका भी फॉर्म लगा, क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? अगर वो कंटिन्यू कर पाते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज है, चाहे पुजारा हो, कोहली हो, इवन रहाणे, उनका परफॉर्मेंस बैटिंग से वैसा नहीं रहा है। अगर आप इंडिया में इस तरह की विकेट्स देंगे, जो जो मैं कहूँगा, मैंने इतनी टफ विकेट्स नहीं देखी इंडिया में जिस तरह से बैट्समैन, मैं कहूँगा स्पिन पैराडाइज विकेट। इवन अगर वहां पर सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण और गांगुली भी खेलते, उनको भी रन बनाने में मुश्किल होती। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि विकेट्स वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और रहाणे क्या अपना बैटिंग से वो फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे, वो देखना दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन राहुल से भी और आपसे भी। राहुल, जी। डू यू थिंक दैट इंडिया शुड गो विथ 3 फॉर्मेट, 3 कैप्टन, मीन्स हार्दिक पांड्या T20, रोहित ODI एंड अजिंक्य टेस्ट? डू यू थिंक? Okay, so yeah, I definitely think three formats, three captains, three formats, three different teams. I think that's a very good idea. Indian cricket
definitely has the resources to go ahead with that plan. Whether those particular captains for those particular formats, that is a big question mark. I mean, I don't know if Rohit Sharma continues as a player in the Test team. Is he really going to continue as an ODI player as well? That remains to be seen. So remains to be seen whether who will get the ODI captaincy after the ODI World Cup. I think after the ODI World Cup is finished, whether India wins it or not, whether they finish runner up, lose in semis, or even lose in the group stages, whatever happens there, I think the ODI captaincy is up for grabs after the ODI World Cup is over. And I think it remains to be seen who's going to be the captain, because it looks like Hardik Pandya could take over that too. But then again, with Hardik Pandya's fitness being suspect, it remains to be seen whether he can handle captaincy for both. But ODI and T20 teams need to be split as well. For a long time, both the red ball and the white ball have been split, and the ODI and T20 team has remained the same. But now I think the ODI and T20 team has to be split, because if you look at the tournament schedule ahead, you have an ODI World Cup once in 4 years, and between every ODI World Cup, there are two T20 World Cups and only the one champions trophy in between in the ODI format. So it's very easy for one day cricket to be neglected in between. And if you have the same captain for both ODIs and T20s, what will happen is ODI cricket will take a back seat for most of the 4 years in between the two World Cups. So you don't want that to happen. So you need to have a separate ODI team who will prioritize only ODI cricket for 4 years. Not, they won't be thinking about Test Championship. They won't be thinking about any T20 World Cups or any IPL, DPL, or blah blah blah. Nothing of that. Then you have your T20 specialists who will play the IPL. They will focus on T20 internationals, and all the workload management that will be sorted out for players too. It's a more meaningful career if they play one format and they play every match in that format, rather than you having a three format player, but they'll take breaks and vacations every month, or they'll get injured and say, I have strain, I am tired. You won't have those issues if you have players specializing in just one format. Yeah, okay. अश्विनी जी, मैंने आपकी लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें आपने ना कुछ टेस्ट बॉलर्स दिखाए थे कि जो Yeah. कि इन फ्यूचर आ सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन वेस्ट इंडीज टीम में सेलेक्ट होनी चाहिए एज ए थर्ड फास्ट बॉलर सिराज और शमी के साथ? आई थिंक अगर मैं इंडिया के जो बॉलर्स की बात करूं जो रेड बॉल में खेल सकते हैं, तो मैं बंगाल के 3 बॉलर्स का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत रणजी ट्रॉफी देखा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुकेश कुमार है, इवन द लाइक्स ऑफ आकाशदीप एंड ईशान पौरल, इनका रणजी ट्रॉफी में अगर हम देखें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रहा है। और इनकी बॉलिंग में सबसे खास बात यह है कि इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और इनको अपनी बॉलिंग का पता है कि कैसे करना है। हम ऑब्वियसली फेमस नाम है उमरान मलिक का भी हम नाम ले सकते हैं, अर्शदीप का भी ले सकते हैं, बट अगर आप कंपैरिजन करें, और प्रसिद्ध कृष्णा भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी हम सब जानते हैं कि बैक इंजरी का शिकार है, और बैक इंजरी से आना और बॉलिंग रिदम को अटेन करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मैं बात कर रहा था अर्शदीप और उमरान की। आई थिंक अर्शदीप और उमरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अर्शदीप के पास रेड बॉल्स के जो ओवर्स है वो नहीं है। वो अभी कैंट की तरफ से काउंटी तो खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको, मेरे को लगता है रेड बॉल में डेवलप होने के लिए 1-2 साल और लगेगा। उमरान का भी सेम केस है, उमरान के पास पेस है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस दिखाया था 150 की पेस है। हमने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो रेयरली 150 को टच कर रहे थे, 140 145 के बीच ज़्यादा रह रहे थे। वो भी पेस अच्छा है, लेकिन वो कंट्रोल के साथ आया तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को लगता है कि उनको अभी थोड़ा और क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर जिन बॉलर्स का भी मैंने नाम लिया है, मुकेश कुमार हैं, आकाशदीप है, ईशान पौरल, इन्होंने पिछले 2-3 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, परफॉर्मेंसेस दी है, और इनको रेड बॉल में बॉलिंग का आर्ट पता है। और चौथे बॉलर है जयदेव उनडकट है। जयदेव उनडकट, मैं कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस रेड बॉल के बॉलर है। 2010 में उनका डेब्यू हुआ था, तब उनको मैं कहूँगा कि कच्चा कच्चा खिला दिया था उनको। 2010 में 18 साल की उम्र में आए थे, और
और अगर आप 18 साल की उम्र में एबी डिविलियर्स, जैक कालिस, हाशिम आमला के सामने आ जाए तो वो आपका क्या दुर्गति करेंगे वो आपको आइडिया है ही है। तो आई थिंक उस प्रोसेस से 2010 से और 2023 के जयदेव उनड़कट में जमीन आसमान का अंतर है। उनको समझ आ गया कि रेड बॉल में बॉलिंग कैसी करनी है। उनकी लेंथ्स बहुत अच्छी है। अगर हमने आपने उनकी थोड़ी बॉलिंग देखी होगी रेड बॉल में, तो आई थिंक ये 3-4 नाम मेरे को जो लग रहे हैं वो वेस्ट इंडीज टूर में हो सकते हैं। बाकी सिलेक्टर्स की मर्जी है, अगर वो उमरान को जाते हैं एक्स्ट्रा पेस तो उनको भी ले सकते हैं। बट आई थिंक मैं रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेज पे देखूंगा और मैं ये देखूंगा कि उनके पास बॉलर्स हैं, उनकी बॉलिंग कितनी अंडर उनके बेल्ट में है। तो मेरे को ये 3 नाम प्रोमिनेंट लग रहे हैं और चौथा जयदेव उनटकट है। जी जयदेव उनटकट नंबर 1 पे रहेंगे, बाकी ये 3 उनके पीछे है। जी, आज का लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अश्विनी जी। देखिए, इंडियन टीम में ये बातें पहले होती थी, बट सब कहते थे कि नहीं, तीनों फॉर्मेट में हमारे कैप्टन चल जाएंगे। विराट कोहली तब खेल रहे थे, बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि रोहित शर्मा कुछ खास कर नहीं रहे टेस्ट मैच में। ओडीआई भी, मतलब टी20 भी उनसे छीन लिया गया एक तरह से, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, प्लस इंटरनेशनल में भी अच्छा कर रहे हैं, बल्कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है अश्विनी जी, क्या अब वक्त आ गया है तीन फॉर्मेट, तीन कैप्टन बनाने का? आई थिंक एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, व्हाई नॉट स्प्लिट कोचिंग एज वेल। आप रेड बॉल की कोचिंग अलग रखे और व्हाइट बॉल की कोचिंग भी अलग रखे। जैसा हमने इंग्लैंड के केस में देखा है और ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा। ऑस्ट्रेलिया के जो व्हाइट बॉल के कोच है वो आई थिंक मॉट हैं, और इंग्लैंड भी चेंज करता रहता है अपने रेड और व्हाइट बॉल के कोचेस। तो आई थिंक इंडिया नीड्स टू लुक एट दैट स्प्लिट कोचिंग रोल। ऑब्वियसली रेड बॉल में आई डोंट नो कि द्रविड़ का कार्यकाल कितना रहेगा, पर व्हाइट बॉल में उनको एक ऐसा विजनरी कोच और थोड़ा टेक्निकली शार्प कोच ढूंढना पड़ेगा जो आज की क्रिकेट को समझता हो। तो वहां पर बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कोच हो सकता है। अगर फॉरनर कोच की जरूरत पड़े तो फॉरनर कोच लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हमने हर चीज स्वदेशी ही लेनी है। अगर हमें क्वालिटी अगर उस फॉरनर कोच में मिलती है तो व्हाई नॉट। हमने देखा है कि इंडिया के जितने भी जो सक्सेसफुल कोचेज रहे हैं वो फॉरनर्स ही रहे हैं। चाहे आप जॉन जॉन राइट लें, इवन इवन द लाइक्स ऑफ गैरी कस्टन। आई थिंक मेन बात यह है कि जो 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 भी कोच आएगा उसका प्लेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे रहता है। अगर हम कहते हैं ना कि जो देसी कोच है ऑब्वियसली वो हमारी लैंग्वेज ही बोलेगा तो प्लेयर्स को ज्यादा जल्दी समझ आता है। पर हमने अनिल कुंबले और विराट कोहली का एग्जांपल भी देखा है कि किस तरह से उनके बीच वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो विराट कोहली ने रवि शास्त्री को थोड़ा प्रेफरेंस दिया। सो दिस ऑल इश्यूज वी ऑल नो व्हाट हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। सो आई थिंक मैं ये चाहूंगा कि कैप्टनसी के साथ आप कोचेस भी चेंज करें। हाँ, अगर कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक टी20 में तो हार्दिक पांड्या को रहना चाहिए। बट आई थिंक 3 कैप्टन्स मे बी टू मच हो जाएगा। आप रेड रेड बॉल और 50 ओवर्स के अलग कैप्टन ले ले और टी20 के अलग कैप्टन कर ले, क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने खुद भी शायद बयान दिया, रवि शास्त्री ने बोला है कि वो 50 ओवर्स नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो शायद सस्टेन ना कर पाए। तो आई थिंक हम 50 ओवर्स और रेड बॉल के लिए अलग रखते हैं और टी20 के लिए अलग रखते हैं। और सबसे खास बात यह है, मैंने ओवर द ईयर देखा है कि जो 50 ओवर्स का गेम है वो इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा सूट करता है, खासकर उनके जो बैट्समैन है। ओवर द ईयर्स देखा है, आप विराट को ले लें, शिखर को ले लें, इवन द लाइक्स ऑफ रोहित, ये सब, जैसे मैं भी 90s का किड हूं तो ये ओडीआई क्रिकेट को खेलते खेलते बड़े हुए हैं। तो उनका जो गेम सेंस है वो भी वैसा है कि पहले ओवर संभल के खेलो, उसके बाद अग्रेसिव अप्रोच लो। लेकिन जो आजकल का जो यूथ है, जैसे हम इवन द लाइक्स ऑफ तिलक वर्मा लेते हैं, स्काई को लेते हैं, देन हमने देखा है निहाल वडेरा को देखा है। मैं पर्टिकुलरली नाम ले रहा हूँ, ये नहीं कि वो वही खेलेंगे। और जितने अभिनव मनोहर देखे हैं तो हमने देखा है कि इनका अप्रोच ही चेंज है। तो टी20 में हम बाकी टीमों से बहुत पीछे हैं। टेस्ट की टीम हमारी ब्रिटल हो चुकी हुई है, टूट चुकी है, लेकिन ओडीआई ऐसा फॉर्मेट है जो इंडिया को सूट करता है। तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि रेड बॉल में वो टीम को कैसे अपनाते हैं, उसको 1-2 साल लग जाएंगे। लेकिन हाँ, टी20 में हमें जो प्लेयर्स है वो टी20 वाले लेने पड़ेंगे। हमें रोहित और विराट से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओके। या अश्विनी जी, एक न्यूज और आ रही है कि आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं, मतलब कुछ टाइम में धोनी को भी एक रोल दिया जा सकता है।
तो Yeah. आपके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट धोनी को देना चाहिए एज अ मेंटर भी अगर देना चाहें तो? या आई थिंक धोनी को हमने T20 वर्ल्ड कप में रोल दिया था, बट आई थिंक वो एक मैं कहूँगा शॉर्ट टाइम के लिए था। बट मैं ये कहना चाहूँगा, क्या धोनी उस रोल के लिए खुद आना चाहेंगे? वो सबसे बड़ी बात है। ऑब्वियसली धोनी धोनी जैसा मेंटर कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि धोनी का जो हमने खासियत देखा है कि वो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। कहने का मतलब वो एक एवरेज प्लेयर से भी बेस्ट निकलवाना जानते हैं। उसकी कई एग्जांपल है, जोगिंदर शर्मा है, अगर आप ईशांत शर्मा को ले, जडेजा ले, अश्विन ले, इन्होंने कितना कितना समय लगाया एक अच्छे प्लेयर बनने में। जडेजा, मेरे को याद है 2000 जो 9 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 30 यार्ड का सर्कल भी उनसे पार नहीं होता था। उन्होंने बहुत टाइम लगाया डेवलप होने में। ईशांत शर्मा फोकट के 30-40 टेस्ट खेल गए बिना कोई परफॉर्मेंस दिए हुए। हम यही बोलते रहे कि उनका लेंथ अच्छा है, लेंथ अच्छा है, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत टाइम लगाया। तो हमने देखा है कि धोनी जिस पर एक बार थोड़ा हाथ रखते हैं उसको लंबा खींचते हैं। तो नो डाउट धोनी जैसा मेंटर होना इंडियन टीम के लिए सौभाग्य की बात है। बट मैं ये देखना चाहूंगा क्या धोनी खुद आना चाहेंगे, क्योंकि हमने धोनी को ओवर द ईयर्स जितना देखा है, वो थोड़ा अपने में ज्यादा कहते हैं ना कि मसरूफ रहना अपने में ज्यादा पसंद करते हैं। बट या अगर आप उनका मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को मेंटर किया, शॉर्ट टूर्नामेंट्स में ही आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। Rahul Iyer, your views, if Dhoni come to which format will be suitable? If Dhoni is a mentor for Team India. I think, see, when it comes to being a mentor of a team, the format doesn't really play too much of a factor. As far as tactics and advising the team, as far as advising the team, like technically and tactically and all that, he's more suited for white ball cricket than test cricket. That is very obvious. But for just mentoring players and trying to keep them in the right mental space, it doesn't matter what format you're playing, because any format you play, you need to be in the right mental space. That is very important, because if you're not in the right mental space, it doesn't matter what tactics or game plans you have, you won't be able to implement that. And that's what a mentor does really. Whether he comes as a mentor, that'll be very good, because he's very good with people. He has very good he's good at man management Yeah. and putting players in the right mental space to perform. Whether he'll take it up or not, it remains to be seen, because at the moment he is still playing in the IPL. We don't know, he might play another IPL season, so he's already doing a lot of traveling around and conditioning specific to the IPL. Because when he plays the IPL, it's not just those 2 months that he's away from home. He starts preparing in like February, March itself, maybe even end of January. So it becomes like 4 or 5 months away from home. He's already spending that time away from home. So it might take a little bit of time even after he stops playing IPL to kind of take up a mentor role with the team and commit to traveling a lot. And while he's still an IPL player playing for CSK, he may not take up the mentor role in a long term, because then it becomes too much traveling for him. Plus, also preparing as a player for the IPL. So he it might come maybe a good like 4 or 5 years after he's done playing IPL. That's my opinion. या आई थिंक आई विल कंटिन्यू। आई थिंक MS धोनी अगर मेंटरिंग करना चाहेंगे, तो वो भी एक शॉर्ट टूर्नामेंट्स में, जैसे एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, उसके लिए करेंगे। और मैं एक क्योट बोलना चाहूंगा, जो ग्रेट रिची बेनो है, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट 90% मेंटल गेम है और 10% स्किल है। और जो MS धोनी का जो खास बात है, वो मैन मैनेजमेंट में सबसे जबरदस्त आदमी है। तो जितना हमने इस जो हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कि प्लेयर्स का जो स्किल लेवल है वही रहता है, बट सारा गेम मेंटल का होता है। तो वहां पर आप, अगर आप रेड बॉल ले लें, चाहे T20 ले लें, चाहे 50 ओवर, तो वहां पर आपको मेंटली प्लेयर को फ्रेश रखना होता है। तो आई थिंक उस मामले में आप MS धोनी की हेल्प ले सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्मेट्स, अगर आप T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप भी ले लें, जो प्रेशर टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां पर MS धोनी जैसा बंदा, उसकी जरूरत रहेगी।
जी, बिल्कुल। बट मेरे व्यूज से मैं चाहूंगा कि एम एस धोनी को एक ही डिपार्टमेंट दी जाए, वो दी जाए विकेट कीपिंग की, क्योंकि इंडिया टीम इस टाइम विकेट कीपिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है विकेट कीपर तैयार करो धोनी की हेल्प से। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आई इंडियन टीम थिंक की जो। अगर आप एम एस Yes, धोनी absolutely. Yes. या एम एस धोनी को अगर देखें तो जब शुरू में आए थे एम एस धोनी भी कोई बहुत अच्छे कीपर नहीं थे। जो उनका जो कीपिंग का स्टाइल है, अपार्ट फ्रॉम ए वेरी एक्सीलेंट स्टम्पर, मेरे को लगता है शायद वर्ल्ड के बेस्ट स्टम्पर होंगे वो। उसके अलावा उनकी कीपिंग अच्छी है, मैं नहीं कहूँगा वर्ल्ड क्लास है। स्टंपिंग के मामले में उनसे बढ़िया कीपर कोई नहीं है। बट हाँ, मैं कहूँगा उनकी कीपिंग से ज़्यादा जरूरत मैन मैनेजमेंट में ही रहेगी, क्योंकि कीपर हमने देखा है कि ओवर द इयर्स बेटर होते रहते हैं। कीपर में अगर आप रिद्धिमान साहा की भी सर्विसेज ले सकते हैं। रिद्धिमान साहा बहुत अच्छे कीपर है, उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो एम एस धोनी का कीपिंग से ज्यादा मैं कहूंगा कि मेंटरिंग में ज्यादा रोल रहेगा। जी बट राहुल। मैंने जितना ऋषभ पंत को Yeah. देखा है, Yes. मतलब Yes. या Uh, may I say something? ये Yeah. यार। So I think Dhoni over. I mean, he has had three roles over the years, be it for India or CSK. One is as captain, as a batsman, as a wicket keeper. These three roles. I think Dhoni, the captain, has been the most valuable utility because he knows the game very well. He can. And he has a great cricketing brain. So, wicket keepers, there are many who will come over the years. Many good wicket keepers will come for India over the years, and India has always produced many good batsmen as well. So, Dhoni, as a batsman, is just one among many good batsmen for India. As a wicket keeper, also, he's one among many good wicket keepers. But as a captain, he's probably one of the best India has produced. So his value as a captain is definitely higher than his value as a wicket keeper or a batsman, in my आई थिंक mind. धोनी जहां पर काम कर सकते हैं वो है, पंत को अगर बता सकते हैं वो है गेम रीडिंग। आई या थिंक गेम रीडिंग में आई थिंक धोनी से बेटर कोई कैप्टन नहीं है। और व्हाइट बॉल में मैं जितने आई थिंक 26 ईयर्स हो गए मेरे को क्रिकेट देखते हुए, तो मेरे को व्हाइट बॉल में मैंने धोनी से बढ़िया कैप्टन नहीं देखा। या ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग भी आया है, महिला जयवर्धने भी आया है, स्टीफन फ्लेमिंग भी आए हैं, नाजिर हुसैन, गांगुली वगैरह सब आए। बट आई थिंक जो विकेट के पीछे जो स्पिनर्स के को जो गेम खिलवाने का काम है, स्पिनर्स के खिलाफ धोनी वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन है व्हाइट बॉल में। अगर आप देखें, चाहे केदार यादव से रोल लेना हो, इवन इवन द लाइक्स ऑफ कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अश्विन, हरभजन, तो उनसे बेटर मैंने नहीं देखा कि स्पिनर्स को कोई चलाता है। तो आई थिंक वो अगर ऋषभ पंत को बताना चाहेंगे तो गेम रीडिंग बता सकते हैं कि स्पिनर से कैसे काम लेना है। अगर आप देखें जब कुलचा अपने पूरे पीक पे था तो धोनी पीछे कीपिंग कर रहे थे। ओब्वियसली वो हर वक्त तो नहीं बताएंगे कि किस तरह बॉलिंग करनी है, लेकिन वो चीज वो पंत को ट्रांसफर कर सकता है कि स्पिनर से आप किस तरह से बॉलिंग करवाएं। ठीक है, वो उस चीज में आई थिंक धोनी का कोई सानी नहीं है। तो धोनी वहां पर मैं कह सकता हूँ कि वहां पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। इस तो आप लोगों से आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करने को मिली। इनफैक्ट विजन पता लग गया कि इंडिया टीम अब आगे और क्या कर सकती है कि फाइनली ट्रॉफी आ जाए। अश्विनी जी, क्या आ रहा है इस बार वर्ल्ड कप इंडिया के पास? इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप इस बार। I think obviously as a Indian, we all hope that India will end the drought of not winning the World Cup। 2013 के बाद से जो ड्रॉट चल रहा है वो खत्म हो। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है वो इंडियन टीम को सबसे ज्यादा सूट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के जितने भी ये जो प्लेयर्स हैं, विराट है, रोहित है, धवन है, इवन द लाइक्स ऑफ जडेजा, ये सब 50 ओवर्स ही देखते आ रहे हैं। तो 50 ओवर्स का जो खेलने का तरीका है वो उनको पता है कि किस तरह से खेलना है। T20 में हम बहुत पीछे हैं। टेस्ट की टीम हमारी, मैं कहूंगा कि जो एक टीम बनी थी वो नीचे टूट चुकी हुई है, उसको बनने में अभी फिर 1-2 साल लगेंगे, मे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो 50 ओवर्स में मैं कह सकता हूँ कि हम शायद वर्ल्ड कप में टफ टाइम देंगे, और मे बी हु नोज दैट दिस रोड माइट एंड्स। ओके। सो गाइस, बहुत मजा आया आप लोगों से, कल भी Yeah. बहुत अच्छा या राहुल Yeah. want to say something? यस राहुल। Yeah. So I wanted to actually weigh in on this topic. Actually, I think it's going to be a very interesting World Cup. I think it's probably going to be one of the most unpredictable World Cups in history. I think, yeah, of course, India is a contender based on being the host nation, and last three
World Cups have all been won by the host nation, starting with India, of course, in 2011, then Australia in Australia. 2015, England in 2019. It's going to be very interesting because India, just like all other teams, have given ODI cricket a backseat. I think feel more than any other previous editions of the World Cup. If you look at the 2023 World Cup, teams have given ODI cricket a backseat since 2019, and they've given more priority to the leagues, to the Test Championship. So, in between the World Test Championship and all the T20 leagues, and then the two T20 World Cups back to back years, ODI cricket has taken a back seat, in my opinion. So, a lot of teams have not really done too much preparation coming into this World Cup, and that's India included in this tournament. So it's going to be very unpredictable. What I feel is because usually, actually, the ODI World Cup, you see by now the schedule would have been out 1.5 years before the World Cup itself. You'll see the schedule Yeah, out. Now if you we are saw in that, June. yeah, if you saw that Now in 2019 June, World Cup, the it's schedule is June, and we also, have not even. yeah. Yeah, yeah, so now we are in June. Even now, schedule is not out. We're waiting to see the World Cup schedule. That is very unusual. And usually, even 1 year before the World Cup, you'll hear people talking about the ODI World Cup and giving it some hype. In 2022, last year, nobody was talking about the ODI World Cup at all. Everyone was talking about leagues and T20 World Test Championship and whatnot. So it's going to be very interesting. I wouldn't say India's as much as a favorite as they were in 2011. I think this one is going to be a little bit harder to win. So even if India loses, I wouldn't be very surprised or shocked. And I kind of feel India needs to maybe losing would also be a very good thing for Indian cricket. I'm very controversially saying this would be a good thing for Indian cricket because we need to have some kind of wake up call and change the way we prepare for big tournaments. And I think losing would make us do that. Winning might not make India do that. If we win the World Cup, we might think that it's okay to prepare like this in upcoming tournaments, and then from the next tournaments on, it'll be back to square one. So we don't want that. Maybe losing would also be a good thing. It might be a wake up call. Losing a World Cup on home soil, that'll be a wake up call, and India might change the way they prepare in the future. But So Rahul, sorry, Kunal, one question to Rahul. But I don't you think that its wake up call should be after 2019 World Cup, Yeah. then 2021 World Cup, 2022 World Cup? So, do you think yes, if we definitely. if we lose after if we lose this World Cup too, then do you think that our management will be awakening too? I don't think so. That is a question, but it has to happen at some point. Regardless, if we win, definitely no wake Yeah. up call will happen. That you can be very sure. I think losing is the only way to bring a wake up call. Whether the management will wake up or not, that is another question. Yeah. Yeah. Okay. Uh, so let's see how the India will perform, but hope for a good World Cup because finally we need some trophy because India is qualifying for semi-final, finals, but still they need a trophy, and I am confident that India will definitely take it because I think this will Yeah. be the last World Cup for Rohit Sharma. Also, I think so. Mm, Yeah. could be last of Kohli as well. I Yeah. think Yeah, India will definitely make the semi-final. In my opinion, I think it'll be India, Pakistan, Australia, and England, the final four. yeah, But same, it same. could be anyone. Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. They're subcontinent teams. They can also compete with Yeah, India. We Sri can't Lanka write can them off. surprise many teams in the World Cup. West Indies also, if Shai No, Hope come to no, no, open. no, no. West Indies, maybe South Africa, but of course South Africa are chokers. Yeah. They'll even lose if Nepal qualifies. They might even lose to Nepal. Also, you never know with South Africa. They might lose to Afghanistan, Bangladesh also in this World Cup. You can never predict with them. Yeah, it's a still a mystery how they lose to Dutch. Yeah, They lost to Netherlands. I couldn't believe last Yeah, T20 World Dutch Cup. team. That's shocking. but as of now in World Cup Yes. qualifier, I want to see one and only match, the match between West Indies and Zimbabwe. I want to see that match clearly because I think that will be the main match of qualifier.
Let's see who will win. I know Sri Lanka will win. Yeah. Sorry, West Indies will win, but Mm, I want to see No, 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 Zimbabwe. no. You can't. I have a Yes. feelings. I have a feeling Zimbabwe will defeat Yeah, West Indies. That is my yeah, gut yeah. feeling. Same, My same. gut feeling says Zimbabwe will Same win. here, same here. You can't put straightforward to West Indies because I think Zimbabwe is playing fantastic cricket for past 1.5 years. So they have Yeah, equal chance to yeah, beat West Indies. yeah. This West Indies is a team that lost to Ireland and Oh, Scotland in the last World Cup qualifiers. You cannot. There's no yeah, guaranteed yeah. win with them anymore. They are Yeah, very unpredictable team. yeah, definitely. Yes. When this match will happen, definitely we have a discussion, long discussion between these two teams. So, guys, thank you very much for your time again. And yesterday, there was so many views. This is the first time in my YouTube channel that more than 10 people have watching the live, and I think today this will be happen again. So, thank you very much, guys, for your time, especially Rahul Ayyar. So, your debut is Yes. good Thank luck for you. me. I hope. Uh, so Yes. Absolutely. Yes. Yes. yeah, okay. Thank Thank you, you. Ashwini, for your time. Thank you, Rahul Ayyar. So we will meet again for tomorrow, and we will discuss about the World Cup qualifiers also. So guys, I hope you all like our videos. So just subscribe KFCS and just waiting for another video. We will definitely make a separate video of Indian performance of Indian World Cup also. So let's see when it will be happen, but you will get a same video. I think maybe 2 or 3 days, within 2 3 days. So for that you have to just press the bell icon so that you will get a notification first. So thank you very much, guys. Okay. Okay, bye. Good night. Yeah. Good Good night. night.